This dried out pumpkin shell will be sanded, cut, decorated, and transformed into one of the most important instruments in classical Indian music. It's called a Tanpura. And for hundreds of years, craftspeople like Farooq Abdul Majid sitar maker have hand-carved them out of gourds instead of wood. जब ये चार तार जैसे बनेंगे तो पूरा विश्व का भंडार वो तानपुरे के उसमें से निकलता है. His family has been making musical instruments like tanpuras and sitars for 7 generations in his hometown of Meerut. This city of over 500,000 people in Western India is known as a hub for classical musicians and as the birthplace of this craft. तानपुरा या सितार बनना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मीरज में बनना बंद होगा तो मीरज को कोई पहचानने वाला नहीं होगा. It takes at least 3 weeks to make just one, and they cost almost 3 times as much as the smaller electronic versions. We went to Meerut to find out how the art of turning pumpkin shells into instruments is still standing. यहाँ पे अभी जो तुम्बा है उसको निकालेंगे. Imtiaz Abdul Majid sitar maker says the secret to a Meerut Tanpura is the shell of a bottle gourd. This variety is grown specially to make instruments and must be hung to dry and harden for a year. He soaks it in water for up to 2 days and scrapes it clean inside and out. भिगोने के बाद कैसा है, ये जो अभी जो हार्ड है इसमें तो एकदम जैसा रबर जैसा रहता है. भिगोने के बाद उस तरह से होता है वो. Imtiaz started this job when he was just 13 years old. Now, at 44, he works alongside 7 family members, hand-making tanpuras and sitars. He cuts the shell about a quarter of the way in and scrapes out any debris left over. This will become the tumba, the body of the tanpura. Wood will make up other parts of the instrument, like the soundboard and the neck. Ensuring its good quality is crucial. They season it for 3 years to strengthen it. They take their time crafting the wood, sawing, carving, and filing it down. फिर रहता है और ये पूरा हाथ पे है, मशीन से तो ये काम नहीं बनता कोई. Shaping the pieces alone can take up to 12 days. But after 31 years, woodwork has become Imtiaz's specialty. He prepares the top of the tumba for the neck joint, known as the gullu. It connects the tumba to the rest of the instrument and must be fitted perfectly to ensure the best sound. He uses bamboo nails that he makes himself. He says they merge well with the tumba and give a more finished look. These sticks of wood preserve the tumba's shape as it dries for 2 to 3 days depending on how sunny it is. जैसे कि तबली जिस तरह से चाहिए उस तरह से इसको फिटिंग करना है. To make the tabli or the soundboard, Imtiaz traces the shape of the hollow tumba onto a piece of wood and cuts it out. He spends a day carving and shaping the tabli. लेकिन जो भी है हमारे नजर पे काम चलता है. नजर पे जो भी होगा काम परफेक्ट बनना चाहिए ना. It takes at least a day to make the neck of the tanpura, known as the dand. Imtiaz uses a block plane to hollow out a 40-inch piece of wood. He assembles the tanpura and glues the pieces with wood adhesive and taps to check the sound. अभी ये आवाज है, यहाँ पे ब्रिज आएगा, यहाँ से आवाज आएगी, यहाँ से आवाज आएगी, इसमें भी आवाज परफेक्ट आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए. Then Imtiaz hands it over to his uncle Farooq. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या इम्तियाज, क्या चले? अल्हम्दुलिल्लाह. He's been designing the family's instruments for over 40 years. And
And it's a group effort. 8 of his relatives work together to preserve the legacy. वो उस तरह पहले रफ करेंगे, फिर वो जैसे आँखियों को चुभेगा, अच्छा दिखेगा तो फिर ठीक है। ऐसे फिर हमारे जो बड़े भाई हैं उनसे बातचीत करके, भाई ऐसे ऐसा ये पैटर्न अपने को यहाँ पर करना है, तो ये अच्छा दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, तो बोलेगा अच्छा दिखता है बनाएंगे, तो वो भी सजेशन उनसे ले लेते हैं। They spend hours carving peacocks, flowers and vines out of wood and strips of white plastic. देखो अभी इस काम में थोड़ा क्या है, हाथ काम करने की वजह से हाथ एकदम सख्त हो जाते हैं, मुलायम नहीं रहते हैं, क्योंकि छन्निया और हथौड़ा का थोड़ा हेवी होने की वजह से हर अंग यानी जो हाथ का जो एरिया होता है वो सब सख्त हो जाता है। In the past, they used ivory, but the Indian government banned the use of it in the late 80s. Farooq mixes coal dust with wood glue to make the black coloring. Polishing brings it all together, but it comes at a price. कुछ लोगों का साइड इफेक्ट होता है, ये साइड इफेक्ट होने से उनके जो हाथ होते हैं थोड़े गल जाते हैं, यानी जख्मा वगैरह होते हैं। He adds a natural resin called gum copal as a final layer and scrapes off any excess polish. It can take up to 3 weeks to make one tanpura. And the family's techniques haven't changed in almost 200 years. If anyone asks Farooq what he does, all he has to say is his last name. The name sitar maker is used by the instrument-making descendants of the man credited for introducing the pumpkin tanpura. Some say the idea to use pumpkins as instruments came to Farid Sahib sitar maker in 1850, after seeing Hindu monks use the shells to store water. Some say it came from seeing African ships use them to transport jars of honey. While other parts of India made the tanpura with jackwood, Farid found the pumpkin gave it a stronger vibration and better sound. The instrument became a staple for classical singers throughout India in the late 19th century. And its popularity put Meerut on the map as home to the best handcrafted instruments. But when electronic tanpuras hit the market in 1979, demand for the handmade ones dwindled. The family now sells only half of what they used to 25 years ago. आज के लोकेशन में, आज के पीरियड में हम साल में 100 से 125 सितारे या तानपुरे बना लेते हैं। Every piece of Farooq's is made with precision. तो हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, मकसद है कि अच्छे साज बने और इसकी फैला यानी रोशनी हो जाए। He drills 4 holes to the top of the dand. This is where the pegs will go. इससे मार्किंग में जब गलती हो जाती है तो इससे तार टूटने का संभव होता है। The strings are made of Japanese steel that he buys from a market in Mumbai. He threads them through these small beads called manka. They're used to fine-tune the instrument. जब तानपुरा पूरा तैयार हो जाता है, जब उसको तार और खूंटियाँ बैठती हैं, तब जब ब्रिज रखने का उस पर जो परेड आता है, तब हम मन में शांति करेंगे कि तानपुरा जट से अच्छा बोले। The bridge made of camel bone supports the strings. These cotton threads called javari help enrich the sound. It takes artisans years to master tuning a tanpura. Simple factors like room temperature and humidity can affect the sound. So craftsmen must have a trained ear. Farooq sits for 3 hours, tightening and loosening the strings until they sound flawless. जब ऐसे लगता है कि चलो अभी ये अपने लिए परफेक्ट हुआ, पूरा परिपक्व हुआ है, अब हमें इसे अपने ग्राहक के हाथ में देना चाहिए, हम मुनासिब समझेंगे। The sitar maker's reputation for high-quality handmade instruments has helped them stay afloat. It's why singers like Subhadra Desai still use the tanpuras made by them.
आप किसी भी आर्टिस्ट को पूछ लीजिए, गायक को, वो मेरठ से ही तानपुरा मंगवाते हैं। एक परंपरा बनी हुई है कि वो उस तरह से ही बनाएंगे तानपुरे। She has been practicing Hindustani classical music for over 4 decades. When she was just 13 years old, she got her first Tanpura, which was made by Farouk's family. तानपुरे क्या होते हैं कि ये ना अपने बच्चे जैसे होते हैं। उसके लिए जितना प्यार होता है ना बच्चे के लिए, तानपुरे के लिए गायक को उतना प्यार होता है। The industry is facing competition from electronic Tanpuras and phone apps. But Subhadra says that while digital options may be practical, they do not match the authentic tones of the original. वो कान में जब तक देखो तानपुरे को, जब हम तार को ऐसे बजा रहे हैं तो ये तार हिल रहा है, तो उसका जो वाइब्रेशन जब तक आ रहा है, वो वाइब्रेशन आपको अपने गले से जो आप स्वर निकाल रहे हैं उसके साथ मर्ज करने में वो मददगार होता है। वो यहाँ पे सीधे आ रहा है, इसको इधर तो नहीं रख सकते। She performs throughout India and teaches music at universities. Many of her students still use Tanpuras made in Meerut. A fully decorated Tanpura can cost up to 33,000 rupees or around $400. डेकोरेशन सिर्फ जो हमारे जो ग्राहक हैं, कस्टमर आए, उनको जो है सिंपल डेकोरेटेड का ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये मामला जो है पैसों का मामला है। They make about 6 to 8 Tanpuras a month and split the profits among themselves. और एक काम में मेहनत ज़्यादा होने के वजह से मुनाफा कम है। They worry that apathy and modern alternatives may render the family business obsolete. But their deep love for music has helped them carry on the family's legacy. हमारे भगवान से अब ऐसी प्रार्थना है कि ये कारोबार फूले और फले, ताकि संगीत का विश्व में भंडार हो।